So, good afternoon to everyone. Myself, Miss Ritika, Faculty of Nursing, LLRM, College of Nursing, Meerut. So, today we will deal viral hepatitis B, C, D. So, previously we have discussed hepatitis A and hep C. We have discussed many times. So, total हमारे जो hepatitis हैं, that is the 5 types A, B, C, D, E. But today we will discuss about hepatitis B, C, and D. So, as we know, we are having in our body only one liver. लीवर एक ही है, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन एक है, यूट्रस एक है, फैलोपियन ट्यूब दो हैं एंड ओवरीज दो हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर लीवर ओनली वन है, क्वांटिटी इज वन. सो एज वी हैव लीवर वन, सो हैविंग मैनी टाइप्स ऑफ डिसीज कंडीशंस जो लीवर पे हो सकती है. तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? एज अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज, it can be it can be non-alcoholic fatty liver disease, or it can be viral hepatitis or coronavirus. So as we know कि लीवर एक है बट उसको डिसीज काफी तरीके से लग सकती हैं, जैसे कि अल्कोहल से रिलेटेड हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज की वजह से भी डिसीज हो सकती है, एंड वायरस की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, एंड कोरोना वायरस भी इम्पैक्ट लीवर को करेगा ही करेगा. नाउ व्हाट इज हेपेटाइटिस? वी हैव डिस्कस्ड लीवर एक है, हमें ये भी पता चल गया कि कौन कौन से वायरस से लीवर में इन्फ्लामेशन हो सकता है. नाउ वी विल डिस्कस कि हेपेटाइटिस क्या है. दैट इज हेपा मीन्स लीवर एंड टाइटिस मीन इन्फ्लामेशन. सो इट्स वेरी सिंपल मीनिंग. हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन द liver. Now hepatitis means inflammation in liver is very clear mention is here. So this is the healthy liver and this is the unhealthy liver. Now viral hepatitis. We have discussed previously hepatitis क्या है. Now difference is viral hepatitis क्या है. So viral hepatitis means inflammation, swelled or enlarged of liver caused by virus. Virus के through कुछ भी स्वेल्ड हो रहा है, एनलार्ज्ड हो रहा है, किसमें? लीवर में. इट मीन्स दैट वायरल हेपेटाइटिस. इट्स वेरी क्लियर मीनिंग. So classification of viral hepatitis as previously we have discussed. So viral hepatitis is enterically transmitted and blood-borne transmission. In enterically transmitted, that is the hepatitis A and hepatitis E, and blood-borne transmission, that is hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D. Now hepatitis B. So we have discussed and we will focus today in hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D. So first we will see hepatitis B. So for hepatitis B, causative agent is hepatitis B virus, and hepatitis B virus is having nucleic acid that is DNA. And if we are talking about hepatitis B virus prevalence in general population, that is 2%, and incubation period of hepatitis B virus that is 75 days, and अगर हम एवरेज में बात करें that is 30 to 180 days. And if we are talking about cryonicity of the hepatitis B virus, so that is high risk for cirrhosis patient and hepatocellular carcinoma patient. जो पेशेंट सिरोसिस, जिन पेशेंट को सिरोसिस है एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, सच टाइप ऑफ पेशेंट हाई रिस्क में होते हैं. नाउ ट्रांसमिशन कि हेपेटाइटिस बी वायरस का कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है. सो फर्स्ट इज वर्टिकली थ्रू मदर टू fetus. Second is needle stick injury. Third is sexual. Next is unsaving by infected or not proper or infected razor, so it can be. Now tattoos and blood transfusion. अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है और वो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो उसके थ्रू भी हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. नाउ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी वायरस इज नॉट स्प्रेड थ्रू. ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से फैक्ट हैं जिनके थ्रू हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड नहीं होता? सो फर्स्ट इज कंटामिनेटेड फूड.
मीन्स वी कैन से कि अगर फूड है थोड़ा कंटामिनेटेड है या फास्ट फूड है तो उससे स्प्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट इज शेयरिंग फूड। देयर इज अगर फूड शेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड नहीं होता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर है बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है तब भी हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड नहीं होता। एंड शेयरिंग और शेकिंग हैंड, तब भी हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड नहीं होता। एंड स्नीजिंग। Now, high risk groups hepatitis B virus, so that is infant born to infected mothers. जो मदर्स इन्फेक्टेड हैं और उन्होंने डिलीवर किया है इन्फेंट मींस बेबी, सो वो किस ग्रुप में आ जाएंगे? हाई रिस्क ग्रुप में आ जाएंगे। सेक्स पार्टनर्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्संस, अगर इन्फेक्टेड पार्टनर्स है सो हाई रिस्क कंसीडर होगा। मैन हु हैव सेक्स विद मैन, injection drugs users, those individual persons are using drugs, so वो भी high risk में ही consider होंगे। and household contacts of known person with chronic hepatitis B virus infections, that also considered as a high risk person। and healthcare professionals like lab technicians, pharmacological staffs, nurses, as well as doctors। and hemodialysis patient, those patients are undercomes in hemodialysis, जो पेशेंट डायलिसिस लेते हैं वो भी हमारे हाई रिस्क में ही आते हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सो वी हैव डिस्कस्ड कि हाई रिस्क कौन कौन से हैं। वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स एज वेल एज कॉजेज। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस बी। सो फर्स्ट इज फीवर, loss of appetite, tiredness, pain in muscles and joints, nausea, diarrhea, vomiting, पेन इन abdominal। हेपेटाइटिस बी वायरस में पेन abdominal में होता है। यहाँ पे अभी डायरेक्शंस या फिर ये नहीं बताया है कि लेफ्ट में या फिर राइट में, ओनली पेन इन abdominal होता है। हेडेक, डार्क यूरिन, pale stools and jaundice, these are the clinical manifestation of the hepatitis B virus। Now diagnosis, so if we are focused on diagnosis, so liver function test, in liver function test what we will check? Level of aminotransferase and bilirubin। लीवर फंक्शन टेस्ट जब हम पेशेंट का करेंगे तो उसमें हमें लेवल चेक करना है कि एमिनो ट्रांसफेरेंस का लेवल इंक्रीज हुआ या फिर बिलिरुबिन लेवल कितना है। अगर लेवल इंक्रीज है मीन्स पेशेंट इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट इज सीरोलॉजिकल मार्कर्स एंड हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए, न्यूक्लिक एसिड वी हैव टू बी चेक। Now serological markers, in serological markers of hepatitis B virus patient, that is hepatitis B core antigen, hepatitis B surface antigen, hepatitis E antigen, hepatitis B E antigen, hepatitis B surface antibody, antibody to hepatitis E antigen and hepatitis B core antibody, IgM and IgG. These are the serological markers of hepatitis B virus. Now treatment of hepatitis B virus, that is treatment also is divided into two categories. First one is acute infection and second is chronic infection. So before providing the treatment we have to be understand कि patient को किस level का infection है, that is acute or chronic। अगर patient को chronic infection है then there is a no specific treatment, only need supportive treatment। अगर हमारे patient को acute infection है so there is a no specific treatment, only supportive treatment we have to be provide। अगर patient को chronic infection है then we will go for oral antiviral agent, that is tenofovir and entecavir, and regular follow-up continue lifelong, as well as prevent liver damage and hepatitis cirrhosis and carcinoma। Now treatment of the chronic hepatitis B virus, in this table they have written drugs and dose of the drugs। So first we have to be give tenofovir disoproxil forminarate drugs, dose will be 300 mg once daily। Next we will go for the entecavir, adult with compensated liver disease means
पेशेंट इन्फेक्टेड है बट सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स इज नॉट प्रेजेंट, सो इस टाइप के पेशेंट को जब हम ड्रग देंगे डोज विल बी 0.5 mg once daily. Then after anti-cavir adult with decompensated, we have discussed compensated and decompensated. Compensated means इन्फेक्शन प्रेजेंट है बट सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है. डीकम्पेंसेटेड इन्फेक्शन है एंड सिम्टम्स भी है. सो सच टाइप ऑफ लीवर डिसीज में हमें पेशेंट को डोज देना है 1 mg once daily. नाउ टीनोफोवीर अल्फानेमाइड फिनोमिनेट tablet we have to be give dose 25 mg once daily. Now prevention of hepatitis B virus, so as vaccination of the hepatitis and proper checkup of the antenatal clinic. As we know, in our pregnancy time there is a 3 trimesters, so proper vaccination, proper antenatal clinic checkup, we have to be go for the prevention from hepatitis B virus. Now proper contraception and proper using of the needle and using PPE kit. Now we will discuss about hepatitis C. So previously we have discussed about hepatitis B. Hepatitis B virus क्या है, उसका clinical manifestation क्या है, as well as we know diagnosis, treatment as acute and chronic, as well as doses of the drugs. Now we will discuss about hepatitis C virus. So in hepatitis C virus, earlier known as post-transfusion, an incubation period of hepatitis C virus that is 2 weeks, and if we are count in months that is 6 months. And if we are talking about prevalence of hepatitis C virus, that is 1 to 2%. In hepatitis B virus that is the 2%, but in hepatitis C virus it is 1 to 2%. Now we will see positivity in high, कि पॉजिटिविटी कितनी हाई है हेपेटाइटिस सी वायरस का. सो फर्स्ट इज पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, जो लोग इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को उनको चांसेस है सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी वायरस होने के. डायलिसिस पेशेंट, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड केयर वर्कर्स, सेम एज हेपेटाइटिस बी वायरस, as well as high chronicity potential, that is the 80% of the hepatitis C virus, an important cause for cirrhosis and hepatocellular carcinoma, and viral genotypes. If we are talking about viral genotypes of hepatitis C virus, that is 1 to 6, and in India genotypes 70% and 29% are common. हमारे इंडिया में जीनोटाइप्स जो है वो 70% है एंड 29% जो है वो कॉमन है. नाउ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस. सो previously we have discussed transmission of hepatitis B virus. Both are same and similar by the needle stick injury, by the blood transfusion, by tattoos, and by inject drugs, and as well as dialysis patient. Few things are similar like needle stick injury, blood transfusion, and tattoos. In hepatitis C only 2 things is different. First is inject drugs, that is also is same, but here we mentions specific कि इसमें इसकी वजह से भी transmissions होने के chances हैं. Now infrequent mode of transmission, sexual contacts, as well as improper shaving, and vertical transmission from mother to fetus. Now clinical manifestation of the hepatitis C virus. So fatigue, dark orange color urine or clay colored stool, fever, jaundice, joint pain, body ache or weakness, loss of appetite, nausea, vomiting, pain in right side of abdominal. As in a previous slide I specified in hepatitis B clinical manifestation, hepatitis B वायरस का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें पेन तो होता है एब्डोमिनल में बट नॉट स्पेसिफाई और कैटेगराइज अ साइड. बट हेपेटाइटिस सी वायरस में जो पेन होता है दैट इज द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल. सो ये इंडिकेट करता है कि कौन से टाइप का वायरस का इन्फेक्शन पेशेंट को है. सो राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल. नाउ डायग्नोसिस. सो ईच डायग्नोसिस इज स्पेसिफाई कि वो हम क्यों कर रहे हैं. सो फर्स्ट
वन इज एंजाइम इम्यूनोएसे। तो वी नो कि हम क्यों कर रहे हैं डायग्नोसिस। तो ये टेस्ट जो चेक करता है दैट इज द एंटीबॉडी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। नाउ जीनोटाइपिंग। जीनोटाइपिंग में क्या है, इट इज अ ब्लड टेस्ट, और इस ब्लड टेस्ट में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जीनोटाइप्स ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस का क्या है, कौन सा जीनोटाइप्स है। नाउ हेपेटाइटिस सी प्रोफाइल सीरोलॉजिकल टेस्ट, in that we have to be check the number and activity of the hepatitis C in the blood। ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस का कितना क्वांटिटी में नंबर है, क्या उनका एक्टिविटी है, दैट विल बी चेक विद द हेल्प ऑफ हेपेटाइटिस सी प्रोफाइल सीरोलॉजिकल टेस्ट। नाउ liver biopsy, in liver biopsy we have to be receive or we have to be take a small piece of liver and send to a lab for test, that is the liver biopsy। Now liver function test, so previously also we have discussed in liver function test we have to be check that bilirubin level increase हुआ है या फिर normal है या फिर down हुआ है, what we have to be check focus on bilirubin level in liver function test। Now treatment of hepatitis C virus, so hepatitis C virus is curable and effective direct acting antivirals, genotype based treatment regimens, 3 pain genotypic regimens approved by WHO. Treatment duration is 12 to 24 weeks. Now, this is the treatment of hepatitis C virus. So here category of patient कि किस टाइप का पेशेंट है, रेजिमेंट रिकमेंड्स कौन सा हमें रेजिमेंट रिकमेंड करना है, एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे ट्रीटमेंट का क्या ड्यूरेशन रहेगा। तो फॉर एग्जांपल पेशेंट विदाउट सिरोसिस, हमारा जो हमारे पास पेशेंट आया है वो विदाउट सिरोसिस है एंड अनकॉम्प्लिकेटेड है, सो वी हैव टू बी प्रोवाइड सोफोसुवीर 400 mg and declustavir 6 mg 60 mg, and duration of treatment will be 84 days and 12 weeks। Now second patient will come with cirrhosis and compensated already we have discussed। पेशेंट को इन्फेक्शन लगा हुआ है बट सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम्स नहीं आए हैं, मीन्स हम उसको रेजिमेंट्स कौन सा रिकमेंड करेंगे, दैट इज द सोफोसुवीर 400 mg and then belpetacivir 100 mg and duration will be same 84 days and 12 weeks। Now patient with cirrhosis and decompensated, so such type of patient को सोफोसुवीर same 400 mg and same medication we will provide 100 mg and rifavirin 600 to 12 mg we have to be provide and 84 days 12 weeks duration will be same। Now prevention of hepatitis C virus, in hepatitis C virus prevention will be same, prevention from needle-stick injury and एक syringe means one time user, अगर हम syringe use कर रहे हैं needle use कर रहे हैं that will be using only one ins to one patient and using proper PPE kit। Now we will discuss about hepatitis D virus, so previously we have discussed hepatitis B virus। in hepatitis B virus we know कि कैसे ये spread होता है, क्या इसका प्रिवेंशन है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, acute and chronic, as well as we have discussed hepatitis C virus, what is hepatitis C virus, incubations period, as well as diagnosis we have discussed clinical manifestation and treatment। Now we will see hepatitis D virus कि D virus क्या है, क्या incubation period है, as well as so hepatitis D is defective RNA virus and requires hepatitis B virus replication for its multiplication, occurs as core or super infection with hepatitis B virus, leads to severe course of liver disease and cryonicity. Yes, it is a cryonicity. Cryonicity means long time disease or long term disease। डायग्नोसिस हेपेटाइटिस डी वायरस अगर किसी पेशेंट को है तो कौन सी डायग्नोसिस के लिए हम लोग को जाना है, सो दैट इज द PCR, IgG, anti-hepatitis D virus, IgM, and anti-hepatitis D virus. We will go for such type of diagnosis। Now treatment. In acute hepatitis D virus, supportive care is given। अगर हेपेटाइटिस डी वायरस में अगर पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस डी वायरस है, सो सपोर्टिव केयर वी हैव टू बी गिवन। इन क्रोनिक सिनारियो वी गो फॉर हाई डोज इंटरफेरोन
with or without tenofovir may be used. Now, prevention of hepatitis D virus. So, as previously we have discussed, vaccination is must to prevention from any types of hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, or hepatitis D. Proper protection as well as PPE kit. Now, nursing management. So, if we are talking about nursing management, so patient education. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट प्रेग्नेंट है, एंटीनेटल क्लिनिक के लिए आ रही है, उस टाइमिंग में हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. कोई पेशेंट आया है, वो कुछ अपने साइन एंड सिम्टम्स बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेशन, हेपेटाइटिस के बारे में बता सकते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में बता सकते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बता सकते हैं, एज वेल एज काउंसलिंग. We have to be provide the counseling to the patient. And in patient management, when the patient is admitted in the hospital, we have to be provide a proper care, proper medicines, and proper management in patient, means inside of the hospitals. Monitoring for complications. अगर patient को complications है, so we have to be monitors, we have to be know, as per know, we have to provide the treatment to the patients. So complication is like cirrhosis, liver failure, and hepatocellular carcinoma. These are the complications of the liver.